Okay, some breaking news coming in. There's been a new twist now to Rahul Gandhi, the Congress Vice President's elevation saga. It has now been revealed that there was another applicant who did try to file his nomination but was stonewalled by the party. A veteran Congress member and a Muslim face of the party has claimed that his bid to file the nomination challenging Rahul Gandhi was turned down by Congress Chief Electoral Officer. And the Rahul challenger, Ayub Ali, claimed that the Chief Election Officer, Ramchandra Mulapalli, received all of his documents and papers, but his nomination was not duly recognized and was rejected without giving any valid reasons or an explanation. Maushmi joins us for more on this. Maushmi, so first it was Shehzad Poonawalla who launched a direct challenge to the Congress party, questioning Rahul Gandhi's elevation to the top party post, and now comes the latest allegation of another Congress member who wanted to contest the elections. See, Avantika, we are joined by Ayub Ali, who's with us, and in this exclusive conversation, Ayub Ali claims that he was there on the 3rd of this month. He had gone to the Congress office with his nomination paper. He asked for another list of another document from the election authority. He met Mulapalli Ramachandran and he gave this document to him and said he wanted to file for the president's post. But the entire election authority members were taken by surprise. And what happened further, Mr. Ayub Ali will tell himself. So now you claim that you had gone to the Congress office, you haven't got any receipt, you haven't got any evidence that you actually filed your nomination paper for the president post. क्या हुआ था बताइए? मैं 3 तारीख को संडे को अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय गया था 24 अक्टूबर रोड पर, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में जो चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष है मुल्लापाली जी, वहाँ पे लोग राहुल गांधी के प्रस्ताव दे रहे थे। ठीक है, तो मैंने वहां पे जाके मैंने कहा कि मुझे एक नामांकन पत्र चाहिए है। तो उन्होंने वो एक नामांकन पत्र निकाला, प्रस्ताव वाला, जो प्रस्ताव जिस पे किया जाता है, तो उसपे राहुल गांधी जी के साइन वाइन थे, नाम भरा हुआ था। बोले ये लीजिए। तो मैंने कहा मुझे प्रस्ताव नहीं करना, मुझे नामांकन दाखिल करना। किस चीज के लिए नामांकन दाखिल? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, कांग्रेस के लिए, जिसके लिए मैं अधिकृत हूँ। एक मुझे अधिकार प्राप्त है और बाकायदा मेरे पास उसका अधिकृत लेटर है। मैंने फीस जमा की है, मैं कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर हूँ, मैं कांग्रेस का डेलीगेट हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा, मैं एक संदेश देना चाहता था कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लेकिन वहां पे जिस तरीके का बिहेव मुझसे मेरे साथ हुआ है वो काफी अमानवीय था। आपने ये दाखिल किया तो आपको कोई रसीद दी गई? जो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप, तो कोई आपको रसीद दी गई? क्योंकि Avantika, remember the election authority had come out with a press release saying that Rahul Gandhi was the only one who filed his nomination and he was the only one left in the fray. तो यानी कि इलेक्शन अथॉरिटी ने तो माना ही नहीं कि कोई और नामांकन आया है। मेरे नामांकन दबा दिया गया और मैंने जब रसीद मांगी कि मैंने नामांकन दाखिल किया, बोले आप बाहर चले जाइए, आप कोई नामांकन नहीं और ये संभव नहीं है कि आप नामांकन दाखिल कर सके। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, आपको लगता है? क्यों नहीं? वहां पे जब राहुल गांधी के खिलाफ कोई राहुल गांधी के खिलाफ तो कांग्रेस कार्यालय नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने जब वहां पे कहा और करने की कोशिश की तो मेरे साथ लोग मेरे आसपास खड़े हो गए और बोले क्या अजीब सी भाषा में बात कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि कांग्रेस मुख्यालय में कोई विवाद हो, लड़ाई हो, मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस की बदनामी हो। आप शाहजहांपुर से हैं, आप कह रहे हैं कि 1990 से आप जुड़े रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आपको प्राथमिक सदस्य होना चाहिए और बतौर एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो क्या वजह थी कि आप वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती नामांकन दाखिल करने गए थे? क्या वजह थी? क्योंकि कई लोग कहेंगे कि भाजपा ने आपसे कराया, कई लोग कहेंगे कि आप शहजाद के साथ काम कर रहे हैं। क्या वजह थी? मैं भाजपा को जानता हूँ, मैंने जब से होश संभाला मैं कांग्रेस को जानता हूँ, जानता रहूंगा और मैं किसी के संपर्क में नहीं हूँ। ठीक है, मैं किसी के संपर्क में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के पास जाऊंगा। कांग्रेस अगर मुझे निकाल भी देती है तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस की सोच के साथ काम करता रहूंगा। आपके पास कोई सबूत है कि आप 3 तारीख को गए थे कांग्रेस दफ्तर में और आपने कम से कम नामांकन पत्र दिया था? कोई सबूत है? कुछ आपने किया था, डॉक्यूमेंट कोई?
मैंने वहां पे फोटो ली थी 24 अकबर रोड पर 3 तारीख को मैंने बाहर निकल के फोटो ली थी, वो मैंने ट्वीट की है और वो आपको भी मैंने ट्वीट की है, उसे दिया है, वो आज तक को भी मैंने दिया, सबको दिया है। तो वही मेरे पास सबूत है। और वहां पे फोटो खींचने, अगर मैं वहां पे फोटो खींचता या कोई विवाद करता तो शायद मेरे साथ मारपीट हो जाती। तो आपने मुल्लापल्ली जी को कांटेक्ट करने की कोशिश की क्योंकि आपने नामांकन दिया था कि हाँ, सही है, वैध है, नहीं है, एक्सेप्ट हुआ है? मैंने कई बार उन्हें फोन किया लेकिन उन्होंने मुझसे बात करने से मना कर दिया कि वो टाल मटोल करते रहे। कल मुझे बताया गया उनके ऑफिस से कि वो केरला चले गए। So Avantika, Ayub Ali is claiming he's from Shahjahanpur. He's been a member of the Youth Congress, a secretary from Shahjahanpur, and also Uttar Pradesh. He claims that he actually went on the 3rd to Congress office, filed his nomination, and he's saying that even if the nomination was rejected on the basis of documents, he should have been told about it, and rather than the election authority claiming that there is only one. No, but tell me something, Maushmi. Tell me something. Does he claim to have the support from anyone else within the Congress, and why didn't he not make noise or speak up when Shehzad Poonawala, went to the media and questioned the organizational election, claiming that it is being rigged and comparing it to some sort of a Mughal-style coronation happening within the Congress? Why is Ayub Ali coming out now and making all these revelations? And where is the proof? He's saying he's just taken a photograph. Where is the proof that he actually went there on the 3rd and submitted his nomination papers to contest? That's right, Avantika. I've been asking him the same question. Ayub साहब, डॉक्टर भी आप पूछ रहा है, हमारे एंकर पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई सबूत है जब आप गए थे वहां पे, और आपने मीडिया को क्यों नहीं तब बोला कि भाई हमने नामांकन दाखिल किया है? उस समय आपने ये बात क्यों नहीं उठाई? मैंने उसी समय ट्वीट किया नामांकन दाखिल करने के बाद। उसमें कई चैनलों को मैंने टैग किया था ट्विटर पे, आज तक को भी किया था, लेकिन मेरी नॉमिनेशन की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैंने हिम्मत की है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की भी सुनवाई होती है। So Avantika, I have seen that tweet which he has done on the 3rd about 6 p.m. where he has put on the original document which he gave to the election authority. Now looking at this document which he has filed, he has also mentioned the membership number 5352376. So Ayub Sahab says that he's been with the Congress party for more than 2 decades, and he's been working closely with the UPCC. He's been a delegate. And आपके प्रस्तावक कौन है? क्योंकि प्रपोजर होने चाहिए, तो किसी ने आपका नाम प्रपोज किया था? हाँ, श्रीमती कमला सिसोदिया है शाहजहांपुर की, इनका मेंबरशिप नंबर है 5352 और कोई है प्रस्तावक? हाँ, दूसरे हैं मिस्टर अनीस। आपने 2 सेट दाखिल किए थे? हाँ, 2 सेट दाखिल होते हैं। जरा कैमरे पे दिखाइए। हाँ, 2 सेट दाखिल। दूसरे कौन है? मिस्टर अनीस, ठीक है, और इनका नंबर है, ये मेंबरशिप नंबर है जी 5352। हाँ जी। तो ये दोनों प्रस्तावक आपके साथ गए थे? जी, उस समय मेरे साथ थे और खड़े थे। तो मैंने उन्हें बताया भी कि मेरे ये दोनों प्रस्तावक है, तो वो हंसने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। मुझे बड़ी वहां पे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करने आ गया हूँ यहाँ पे, और इस तरीके का व्यवहार पढ़े लिखे लोग करेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे, मुझे नहीं समझ। तो आपने जब आपका मकसद क्या था? क्या आपको राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल है या फिर आप कुछ और साबित करना चाहते थे? मैं संदेश देना चाहता हूं कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में तानाशाही चल रही है, मुगल राज चल रहा है, वो सब गलत है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उस बात को सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस में तानाशाही और चापलूसी आती है। So Avantika, you can hear what Ayub Ali is saying. He's also claiming he's made several calls to Mullapalli Ramachandran. Now he's the chairperson of the chief election authority of the Congress party, but he has received no answer about what happened to his nomination paper. Okay, so what does he plan to do next now? He's made all of these claims. He's showing those papers to you and showing the signatures as well. What does he plan to do next? How will he raise the issue further? Has he taken up this issue with the Congress High Command? Has he set up a meeting with the Congress Vice President? If he claims that he's been, a member of the Congress for so long, he's been a Congress leader, then why is he not taking it to the next level?
हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी है आयुब साहब कि देखिए, आपने क्या कोई आपके लिए शाहजहांपुर से आपके जितिन प्रसाद आते हैं, क्या आपने उनसे बात की थी, या गुलाम नबी आजाद से आपने बात की कि भाई हम अपना नामांकन दे रहे हैं? किसी से बात हुई आपकी? मैंने प्रयास किया इन लोगों से बात करने का, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने प्रयास किया कि मैं भरना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, लेकिन किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया, मुझसे बात करने की मुझे बात करने का मौका नहीं दिया। आयुब साहब, सिर्फ क्या आपका मकसद कहीं ऐसा तो नहीं कि हंगामा खड़ा करना था? मुझे अगर सुर्खियां बटोरना था कि भाई आप जाएंगे, आप राहुल गांधी को चुनौती देंगे तो कहीं ना कहीं सुर्खियों में आएंगे, जिस तरह से शहजाद भी। मुझे अगर जी वो छोड़ दीजिए आप। हाँ, मुझे अगर सुर्खियों में बना होना होता तो मैं 3 तारीख को ही बयाननामा कर देता। सारी मीडिया मौजूद थी, लेकिन मैं चुपचाप वहां से चला आया अपना नामांकन पत्र देके। मुझे कांग्रेस की इज्जत प्यारी है और मैं कांग्रेस के लिए ही काम करता हूं और कांग्रेस के सम्मान की लड़ाई लड़ता हूं। नहीं, पर शहजाद पूनावाला का भी यही कहना है कि मैं कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तो कहीं शहजाद पूनावाला के समर्थक तो नहीं है? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं शहजाद से। शहजाद पूनावाला क्या कर रहे हैं मुझे कोई जानकारी नहीं, ना मैं आज तक शहजाद पूनावाला से मिला हूँ और ना मेरी कभी बात हुई है उनसे। कांग्रेस के कई नेता ये कहेंगे कि भाजपा ने आपको खड़ा किया, भाजपा ने आपको पुश किया है, कहीं ये मकसद तो नहीं आपका कि कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश हो? मैं कांग्रेस के लिए ना तो नीचा दिखा सकता हूँ, मैं खुद नीचा देख सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं। छोड़ दीजिए। राइट, मैं कांग्रेस हमेशा सम्मान करता हूं। Moshmi, just stay on with me, please. Just stay on with me. We have Anila Singh from the BJP. Ma'am, thank you so much for speaking to us. So, after Shehzad Poonawala, here's another veteran Congress leader who claims that he was very keen to contest. He had even filed his nomination papers on the 3rd, but he has received no response whatsoever, and going and saying that the elections, the organizational elections, is unfair, it's unconstitutional, and that he, in fact, has been barred to contest. This is the character of Congress party. Their mantra is nepotism, and there is absolutely no democracy in this party, though they love to call themselves the grand old party of India, but the way the behavior of whole of the party is feudalistic. So earlier Shehzad was there, now Mr. Ayub Khan is there. There might be many more who really want to be the part of the system, who really wanted to contest for the president seat, but they were not entertained. Either they were snubbed or the papers got missing. So this is the character of the Congress, and they because they know that they can't survive without the name of Nehru Gandhi, so they are just hanging on it. You know, it's interesting, Ms. Anila, saying that all of this is happening at a time, speaking of nomination papers being rejected. In an interesting case, I know it's unrelated, but even the RK Nagar by-polls, we have 2 candidates who are now out of the race. They're also suspecting foul play. They're, in fact, pointing fingers at the Election Commission. So, you know, these are these various cases regarding elections coming in from different parts of the country, one from the Congress and one from, you know, the RK Nagar by-polls. Your views? No, as a Bharatiya Janata Party... Anila Singh, yes, please go ahead. Yeah, as a Bharatiya Janata Party spokesperson, I can only say that whether it is RK Nagar seat or whether it is the election for the president seat in Congress, any election, any type of election, I think the transparency should be there, and the equal opportunity should be given to all. There shouldn't be favoritism in any sort. But if it is being sought by anyone, it is absolutely incorrect, and it goes against the spirit of democracy. All right. Shehzad Poonawala is also joining us right now on the broadcast. Shehzad, good afternoon. Now, you have been very open and have explicitly expressed your views about the entire election, the organizational election of the Congress. Here's this gentleman, Mr. Ayub Ali, who has come out and pretty much made the same claims. He has questioned the entire process. He claims that he has been debarred. He is being disallowed from contesting as well.
Ma'am, I would like to add a caveat here. I have been in touch with this gentleman called Ayub Ali, who claims to be a delegate from UP. You know, our correspondent, just to add something here, that our correspondent Maushmi, who's sitting with him right now, in fact asked him that question, that have you had the chance to speak to Mr. Shehzad Poonawala, and he flatly denied. He in fact just now told us that he has no idea of you and has never interacted with you as well. Avantika, I have his WhatsApp, I have his recording also. So I'm not a fool. I'm making some claims. Please understand one thing. This person was trying to reach me with a claim that he's a UPCC delegate and that he has tried to fill his nomination. I asked him for all his papers. He sent me his papers. I was legally studying it, whether they were as per the Indian National Congress's constitution. If he has not fulfilled the requirements of the constitution and therefore it has been rejected, you can't hold anybody to book for that. This is not, I mean, I don't want to... So are you saying that his nomination papers were incomplete? He was just not showing our correspondent Maushmi the signatures. I am not giving a final verdict on that, Avantika. My point is that the real story of the fixing of the INC election has taken place at the delegate level, where the delegates, instead of being elected by a secret ballot, have been nominated by the state president. That is the patent illegality for which I have given proof, and for which the Congress has had no answer except for dismissing me as a Congress member. I do not want to, as of now, associate myself with Ayub Ali's claims, because I don't know who has planted him, or he's not planted, or he's a truthful person or not a truthful person. He needs to prove his claims. But irrespective of Ayub Ali's claims, the point on which I have spoken about the election system in the Congress, that remains and that will remain, because that is hard proof that the delegates in Delhi and other states were fixed by the state presidents. They were not through secret ballots. So we can study the legal papers of Ayub Ali, we can study his claim, but the larger message that comes out from this is that it is a coronation, and in the coronation there's only one candidate. There are never two candidates, and therefore you saw only Rahul Gandhi's name there, and Rahul Gandhi should have taken a crown, not his nomination papers. I am being circumspect on Ayub Ali. I will legally study his case. If he has also been wrongly done with or wrongly denied, of course we must highlight Ayub Ali's case as well. But I will be circumspect on associating my entire battle with him as of now. And the fact that he's saying that he's not been in touch with me is a lie. Yes. I have the recording of Mr. Ayub Ali, his incoming call. Why don't you just kindly stay on with me, Mr. Shehzad Poonawala? Why don't you just ask my correspondent, my colleague Maushmi, to just ask that question to Mr. Ayub Ali, if she's there with us right now with Mr. Ayub Ali, who's making all these acquisitions against the Congress party. Maushmi, can you hear me? Yes, Maushmi, so I got a chance to speak to Shehzad Poonawala. So, in fact, he has a few messages. He claims that he has been in touch with Mr. Ayub Ali. He says that there were some discrepancies in the nomination papers, and perhaps they were not incomplete. But Ayub Ali just now telling you a short while back that he never ever spoke to Shehzad Poonawala. आयुब साहब, शहजाद पूनावाला उस तरफ है, तो उन्होंने बोला है कि जो आपके नॉमिनेशन पेपर्स थे उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी थी और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, इसलिए शायद हो सकता है कि आपके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया हो। नहीं तो बताएं तो मुझे कि पर आपने शहजाद पूनावाला से संदर्भ में बात की थी? नहीं, मैंने बात की थी, फोन पे मेरी बात हुई है, लेकिन पर इससे पहले आप कह रहे थे कि शहजाद पूनावाला के नाम समर्थक है, ना आपकी कभी उनसे बात हुई? मैं उनका समर्थक बिल्कुल नहीं, और ना मैंने उनका कभी समर्थन किया है। नहीं, पर शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि उनकी आपसे बात हुई है। क्या बात हुई बताएं ना। दस्तावेज को लेके जो भी आपके फोन पे बात हुई थी उनसे। मेरी बात ये हुई है कि उन्होंने मुझसे फोन किया था मुझे कि आपने नॉमिनेशन फाइल किया है। मैंने किया है। तो बोले आप क्या है, तो मैंने कहा मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। अच्छा, मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। उन्होंने मुझे कई बार फोन किया, फिर मैंने बताया उन्हें कि देखिए ऐसा है कि मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है, आप जो है ज्यादा इंटरव्यू मत लीजिए आप मेरा। तो उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया और कोई बात ही नहीं, इतनी बात हुई है मेरी। तो उनके कहने पे आपने नहीं किया, उनको दिखा के दस्तावेज नहीं किए? तो बताने कब हुआ है? तो आप दस्तावेज मैं पहले नॉमिनेशन परसों शाम को उनका फोन आया था। आपकी बात नहीं। Yes, please go ahead. Shehzad, this is Vantika here. Can I please make my point? Yes, Shehzad, yes.
See, now Ayub Ali has admitted that he had spoken to me. Yes, absolutely. See, my fight is not for publicity. My fight is not to make Rahul Gandhi look like a devil. My fight is for a good system to be implemented. I don't want somebody lying. No, nobody is doing that. Right? No, we're just talking about an allegation that has been made by this gentleman, Ayub Ali. The reason why I did not speak out about Ayub Ali's issue right now is because when he told me that only 2 people have supported his nomination for his thing, the requirement in the constitution of the party is something else. So I was studying it legally. I don't want to jump on Ayub Ali's case and make any claims which will weaken my actual case that the delegates have been fixed. I request the media channels of this country that yes, okay, if his claim has come, let us establish that claim. I'm not denying maybe he has been wrong, but these the major claims that I have made and have been proof for it is that the delegates were fixed by the state president. There is no proof to substantiate it was done by secret ballot, and this perhaps Ayub Ali could, I don't know at whose behest he is working, so therefore I am circumspect about it. If it is true that he was denied, we should actually take it up as another piece of evidence. But as of now, please stick to the real story which I put out, that the delegates have been fixed, and this was always a task force of one person. All right, Shehzad Poonawalla, we just heard you. We'll just have to take a very short break, but we will stay on this story. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.